नाउ अब इस लेक्चर के अंदर हमने कोड के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जैसे आपको एक सिनेरियो बताना है। लेट्स हम जब कोई भी ये आपके पास क्या है, कोड है इस पूरे क्लास का, कि आपके पास इसका टेम्पलेट हो जाता है। आप देख सकते हो ये आपके पास क्लास का नेम है और हम कीवर्ड यूज करते हैं क्लास का और साथ उसका इंस्ट्रक्टर क्लास का नेम हो जाता है। फिर प्राइवेट और दोज एक्सेस स्पेसिफायर्स दैट विल नॉट अलाउ दीज एट्रीब्यूट्स टू बी एक्सेस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। एंड हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि आपके पास जितने भी मेथड्स हैं, ऑल दैट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दैट यू वांट टू बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इनको हम पब्लिक में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास का कि आपके पास एक कीवर्ड होता है क्लास का, फिर उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्टर जो कि क्लास का नेम है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आप प्राइवेट की स्पेसिफायर के अंदर लिखते हो, फिर उसके जो फंक्शंस हैं कि जो वो परफॉर्म करेगा आपके पास उसमें आ जाते हैं। अब इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। जब आप मेन में जाते हो आप क्या कर देते हो, इंस्ट्रक्टर है उसके साथ आपने लिख दिया अहमद एंड इट्स नाउ आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर लाइक दी वेरिएबल्स जो कि हम बाकी जैसे इंट ए लिख देते हैं इज इक्वल टू 10। तो वही सिमिलरली आपके पास ऑब्जेक्ट का भी है कि उस केस में हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर्स, बट इन आवर केस वी आर क्रिएटिंग आवर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स जो भी सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि वो वाले। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। मैं आपको भी जाके डेमो दे देता हूँ कि हाउ यू डू इट एक्चुअली इन दी Visual Studio. This is a Visual Studio. I have created a dummy project. Now going to create a class. How we create a class? Like I am just, in our case it was instructor. So I'm going to create a class instructor. Class instructor, and I have to write the attributes of it. Attribute 1 is the, let's suppose it's a string name and string employee number, and similarly I will be using the public access specifier which will represent the functionality that it's going to perform. Public next class in. So हम क्या करते हैं कि इसकी हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक हेडर फाइल बना दी जो कि हमारे पास एक क्लास का टेम्पलेट बना दी। अब इसके अगेंस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होगी हम क्या करेंगे, उसको एक नई फाइल के अंदर जो कि हम .cpp फाइल के अंदर बनाएंगे। इंस्ट्रक्टर, अब इसके अंदर आपने पहले वाली फाइल को इंक्लूड कर दिया इंस्ट्रक्टर को, फिर void क्या है उस क्लास का नाम इंस्ट्रक्टर और उसके अंदर नेक्स्ट क्लास इनपो था, आपने क्या कर दिया इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट द फंक्शंस दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन द हेडर फाइल in the .h file. हम in the .h file we just create the signatures and in instructor or CPV we will provide implementation to that signatures to that functions. अब हमने क्या करना है, so this was all about the creating header file and the implementation of the that header file. But what if you want to create an object of that class? If I want to create the object of a class instructor, then I have to go add a new item, and in this case it will be a CPV file and we will call it in a main. So this will be a main class or the main function where the program will start execution. So in the main function I'm going to create an object of our class instructor. How we do that, let's see. Hash include iStream using namespace std int main return 0. Now हमने क्या करना है कि इंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को बनाना है। सो सिमिलरली आई एम गोइंग टू हैश इंक्लूड इंस्ट्रक्टर बिकॉज टू हम इसलिए इसको कर रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है जो कि प्रोग्राम है दैट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द क्लास दैट ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास है इंस्ट्रक्टर
अहमद. So मैंने एक इंस्ट्रक्टर बना दिया, इंस्ट्रक्टर अली. दिस इज द सेकंड वन इंस्ट्रक्टर. So you can say, आप देख सकते हो कि मेरे पास it's like a factory of creating an objects of the same types. और अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, all have the same data type and all will have the same functionality. If let's suppose if I say that Ahmad डॉट नेक्स्ट क्लास इन्फो, जो इंस्ट्रक्टर अहमद है वो नेक्स्ट क्लास की इन्फो उसके पास होगी, जो वो कोर्स पढ़ा रहा है वो अपने स्टूडेंट्स को बता देगा कि योर नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी हेल्ड हियर. एंड अली, सिमिलरली अली के बाद भी अपनी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट, एंड ही कैन ऑल्सो टेल देयर स्टूडेंट दैट वेयर टू वॉक टू दिस क्लास. एंड सिमिलरली नाम dot next class info, so he can do the same stuff with his student. So आप देख सकते हो कि same functionality or the same attributes have created the classes and objects of the classes and objects in the Visual Studio. And this was just a basic demo about the this basic concept of object-oriented programming, with a class and with an object, and how to represent them in a UML, and how then you just put them in a Visual Studio in a real code. So this was all about the basic concept of OOP, class and objects. So thank you.